सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हुए आगे traditional shawl. And that makes him look very handsome right now. Ladies and gentlemen, please welcome the constant and a very successful innovator, Shri Dinesh Shahra. Thank you. Good evening, माननीय मुख्य अतिथि श्री आदि गोदरेज, परम आदरणीय मेरे भाई कैलाश भाई, सुरेश भाई, संतोष भाई, समस्त भाभी श्री और अतिथिगण और मेरे रुचि परिवार के समस्त साथीगण, आज 55th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत उत्साह और उमंग का दिन है, जब हम एक साथ मिलकर पूरे रुचि समूह की शुरुआत और उसके विस्तार पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मिस्टर गोडरेज के बारे में कैलाश भाई ने कहा है, नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मिस्टर गोडरेज से मेरा संपर्क सदैव बना रहता है। तो कई बार मैं उनके साथ में दिल्ली ट्रेवल किया एज इंडस्ट्री मेंबर, और उनके बारे में कहूँगा कि जब भी मुझे किसी भी विषय में या किसी चीज़ की सलाह लेनी होती है तो मैं उनके सेक्रेटरी को फोन करता हूँ, तुरंत मुझे समय देते हैं, या तो उनके मामले ऑफिस में मिलता हूँ या विक्टोरिया जाके मिलता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर विद अस। एक साल पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने एक साल पहले ही 2 साल पहले करी थी। एक साल पहले उन्होंने कहा था आपके देवास में 30 तारीख को आ जाऊंगा तो तुम्हारे फंक्शन में जरूर आऊंगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव a standing ovation to him for being with us today. Thank you very much, Mr. Godrej. जो बीजारोपण मेरे पिताश्री सरजी सिंह काका साहब ने 55 साल पहले किया था, वह उस वृक्ष को हम अभी सभी भाइयों ने मिलकर एक बट वृक्ष का रूप खड़ा किया है। आदरणीय जी पिताश्री की विचारधाराओं को सभी भाइयों ने मुख्य अपना मानकर कैलाश भाई के मार्गदर्शन में डिफरेंट वर्टिकल्स के रूप में डिफरेंट बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, आज सभी कंपनियां प्रोफेशनल मैनेजर्स के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। आज का समय अपने कार्य को डिसेंट्रलाइज करने का है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हुए अनलिमिटेड जो अपॉर्चुनिटी विश्व में है उसे प्राप्त करने का है।
पिताजी ने जो बीज बोया था वो एक से अनेक हुआ, और उनके मूल्यों को और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम सब इसी वट वृक्ष की नई शाखाओं में जोड़कर अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएं। रुचि सोया का ये 25th ईयर सिल्वर जुबली है। 18 जनवरी की कंपनी फॉर्म हुई थी और इसलिए इस साल हम सिल्वर जुबली फंक्शंस रुचि सोया का मना रहे हैं। 1986 में ये मात्र 6 करोड़ की कंपनी थी और इस साल 2000 मार्च 10 के अंदर इसने 14,000 के रेवेन्यूज को प्राप्त किया। इस कंपनी का परिवार की ओर से मैं मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ शुरू से रहा हूं और उसको अभी भी उस रोल को निभा रहा हूं। इस कंपनी की प्रति सक्सेस के प्रति मुझे 4 पिलर्स इसके आधार है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्पीड। ये कंपनी जब बनी थी 18 जनवरी को, तो ये उसने चूंकि इस इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, 22 दिन के अंदर ये पब्लिक इशू के अंदर जाके इसने लिस्टिंग अपनी कराई थी, मात्र 22 डेज में। इस स्पीड से कंपनी आगे बढ़ती है। उसने दूसरा पिलर था उसका स्ट्रेच। उसने हमेशा व्यापार को आज नहीं आने वाले 5 से 10 साल के रूप में देखा। तीसरा इसका रहा कि हमेशा हमने सोचा कि भाई हम जो भी व्यापार करें उसमें हम लीडर रहें, बिना लीडरशिप के हमारा कोई रोल नहीं है। तो यदि आप देखेंगे कि सोयाबीन बीज जो 1968 में हमारे ब्रदर इसको खाली तौर पर में लाए थे, वो आज की उसकी जो क्रॉप 9.5 to 10 मिलियन टन हो गई है। रुचि सोया कंपनी उसको 4 मिलियन टन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंपनी ने वेरियस इंडिया में इंस्टॉल कर रखी है। हाईएस्ट लार्जेस्ट सोया प्रोसेसर ये लीडरशिप को हमने 1974 से निभाया है। वो आज भी हम इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी कंपनी है। दूसरा, जब 1992 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो ये मैसेज क्लियर था इंडियन कंपनी के लिए कि अब ग्लोबल साइज रहेंगी, छोटे व्यापार नहीं रहेंगे, लो प्राइसेस रहेंगी, कॉम्पिटिटिव बिजनेस रहेगा। तो पहली रुचि सोया पहली कंपनी थी जिसने भी पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी लगाई मद्रास के अंदर, और उसके 6 से 8 साल के अंदर अक्रॉस द कंट्री नेशन वाइड ऑल द पोर्ट्स में लार्जेस्ट कैपेसिटी के पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी लगा के नंबर 1 डिजिटल ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। तीसरा उसे देखा कि आने वाले समय के अंदर ब्रांड्स का स्कोप रहेगा, लॉजिस्टिक्स का रहेगा, सप्लाई चेन का रहेगा, वैल्यू फॉर मनी बिजनेस का, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट का रहेगा। 98-99 में भारत के अंदर जिस प्रकार से तेल फूड एडिबल ऑयल की कंजम्पशन के लिए ऐसे तेल का जरूरत है जिसके अंदर की कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहे, जिसका जो फूड को तल के बनाए तो उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे। Ruchi was the first company to identify a opportunity in a palm oil sector, and we launched Ruchi Gold in 1999, and today is India's largest cooking oil brand, 2,500 crore sales. Ruchi Gold is India's number 1 palm oil brand. So in जिन भी क्षेत्र में हम रहे, उसके बाद पाम प्लांटेशन इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने पाम प्लांटेशन को डेवलप किया। रुचि सोया बहुत लेट आया था इस बिजनेस के अंदर। उसने 2 लार्ज एक्विजिशन करके और गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करा के इसकी आज की तारीख में इंडिया की लार्जेस्ट पाम प्लांटेशन कंपनी के रूप में इमर्ज हुआ है। उसके बाद बायोफ्यूल जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जत्रो प्लांटेशन या और ऑल्टरनेट फॉरेस्ट्री फॉर सुटेबल बायोफ्यूल्स, इसके अंदर भी हम लोगों ने पिछले 4 साल पहले शुरुआत करी। 2 एक्विजिशन करके हमें इसको अगेन इंडिया लार्जेस्ट बायोडीजल कंपनी के रूप में हम इंडिया में स्थापित हुए हैं। इंडिया की एनर्जी कंपनी IOC
जो कि इंडिया की नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके 1,486 करोड़ के प्रोजेक्ट को कर दिया है। तो जिन भी क्षेत्र में हम रुचि ग्रुप के लोग जुड़े हैं, उसमें उस क्षेत्र में आज की तारीख में इंडिया नंबर 1 उस बिजनेस में है। अब मैं कहूँगा कि भाई ये तो हमने कर लिया, हमने गेट अचीवमेंट्स करे, हमारे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद मिले, कैलाश भाई का उसमें मार्गदर्शन मिला, पिताजी का आशीर्वाद मिला, ये सब चीजें तो करी। अब आगे क्या, हम आगे इसको कहाँ ले जाएंगे? मैं कहना चाहूंगा कि 2010 से 2020 की जो डिकेड है, जिसका कि पहला साल शुरुआत हो रहा है, ये बिजनेस हिस्ट्री के अंदर जो हमने 64 साल की आजादी में भारत में नहीं किया है, वो आने वाले 10 साल में भारत उसको प्राप्त करेगा। गोल्डन पीरियड we will remember as a golden period। एंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम अपने ग्रुप को, अपनी कंपनियों को कहाँ ले जाएंगे, उसको हम क्या दिशा में लेके जाएंगे? ऐसे पाम रिफाइनर जो हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं 2.1 मिलियन टन से 3.2 मिलियन टन का, वो आज की तारीख में सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट पाम ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। परंतु जिस हिसाब से फूड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड में ऑयल कंजम्पशन बढ़ रहा है और जगह की कमी बढ़ती जा रही है, प्राइसेस फूड के बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल के बढ़ते जा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी देखती है, कंपनी ने निर्णय किया है कि भाई हम अपना 40% रॉ मटेरियल खुद प्लांटेशन से बनाएंगे। भारत में प्लांटेशन शुरू किया, इसमें चर्चा की आपको। हमने देखा है कि भाई एशिया के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया, ये 3 एशिया की लार्ज कंट्री में हम पाम प्लांटेशन 2 कंट्री में शुरू कर दिया है। तीसरी कंट्री में गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और इस प्रकार से हम आपको सब्सिडेंशियली प्लांटेशन कंट्री के रूप में इन एशिया के कंट्री में मर्ज हो रहे हैं। अफ्रीका जो कि आने वाले डिकेड का मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया होगा, जहां की ग्रोथ होगी, जहां की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको ग्रुप कंपनी इसको टैप करने जा रही है। हमने शुरुआत इथियोपिया से की है, जहां 25,000 हेक्टेयर जमीन सरकार ने हमको दी। और रुचि से पहली कंपनी है कि जब उनके प्रेसिडेंट से मिलने में गया तो उन्होंने बोला कि देखो तुम इतने काम किए हैं, हमारी कंट्री के लिए क्या करोगे? मैं कहता आप जब जमीन दोगे तो हम बताएंगे क्या करेंगे। उन्होंने हमको मई में जमीन दी और हमने उसको नवंबर में सोयाबीन उगा के उनकी सोयाबीन की क्रॉप को सुपुर्द किया। रिसेंटली हमने नई अपॉर्चुनिटी पिछले 3 दिन पहले हमने गिबॉन में 1 लाख हेक्टेयर पाम प्लांटेशन जमीन का एग्रीमेंट से साइन किया है और हम पूरे अफ्रीका के अंदर, मेडागास्कर के अंदर, इन 3 कंट्रीज के अंदर हम लोग पाम प्लांटेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ये तो फूड सिक्योरिटी के सप्लाई चेन के बारे में रहा। और दूसरा ये कि हम ब्रांड्स के प्रति, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो ब्रांड्स में होंगे, कमोडिटी ब्रांड्स में होंगे, जो ब्रांडिंग में करेंगे, उन्हीं का अस्तित्व कायम रहेगा। कंपनी ने केपीएमजी के एडवाइस से 650 करोड़ का रिजर्व डेवलप किया है, जो कि सिर्फ आने वाले 5 साल से 10 साल के पीरियड में वो ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेगा। अब मैं जो मेरे स्वयं के पर्सनल गोल्स हैं उसके बारे में कहूंगा कि हम नेचर से बहुत कुछ लेते हैं और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम नेचर से कुछ लौटाएं। सर्वेश ने कहा कि भाई हम ग्रीन गोल्ड डे के रूप में बर्थडे सेलिब्रेशन के एमडी का, तो ये पिछले 4-5 साल से इसको बनाते हैं। और कंपनी का जो नेक्स्ट गोल है वो ग्रीन रियल एनर्जी का है, जिसमें विंड पावर, एग्रीकल्चर से बायोमास, सोलर,
बायोफ्यूल्स, इस बिजनेस को एक बड़े रूप के अंदर लेके जाएंगे। पिछले 4 साल हो गए इसको चलाते हुए। हमने इसमें करीब 100 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट किया है और ये आने वाले 3 साल में 200 मेगावाट होगा और इस डिकेड के अंदर 1000 मेगावाट का इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसको अगेन स्वास्थ्य के प्रति हेल्थ एंड वेलनेस is close to my son Sarvesh, so I told him to make good brands, Nutrila or extensions, and be India's largest health and wellness company. अंत में आपको यही कहूँगा मैं कि ये सब चीज पॉसिबल है हम हमारी टीम के डेडिकेशन से, कमिटमेंट से और पैशन के साथ में जो एक कार्य हमको दिया है, छोटा हो बड़ा हो, उसको देखते हुए हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करें। मैं आपको कहूँगा कि जो भी अचीवमेंट हुए हैं कहीं ना कहीं हमने संकल्प किया है, उस संकल्प के प्रति हमारी निष्ठा रही है, कमिटमेंट रहा है, टीम वर्क रहा है, डेडिकेशन रहा है, तो प्राप्त होगा। मुझे याद है कि जब 90 to 93 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे तो मुझे डर लगता था कि मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, इतने रिसोर्स इनके पास हैं, इनके सामने कैसे टिकेंगे, किसने हमारा स्थित होगा जब इनके पास इतने सस्ता रुपया है, इतने बड़े बड़े ग्लोबल साइज है। परंतु ये निर्णय किया था कि भाई नहीं, हम भी यदि कमिटमेंट के साथ में अपने संकल्प में पूर्ण विश्वास रखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये सब नंबर 1 के जो अचीवमेंट बनी थी रुचि टीम ने अपने कमिटमेंट के साथ। So I would like to say, excellence is a gradual result of always striving to do better. All of you are great achievers, great performers. You believe in yourself, you achieve it. इसलिए इतना ही नहीं, मैं आपको कहूँगा, अंत में यही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। We want to do the best in all the three issues. Thank you. Welcome. Shri Godrej ji, standing ovation. Good evening, everyone. Members of the Shahra family, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be a part of an event that acknowledges stability, celebrates success, and reinforces commitment. Before I begin, I would like to take this opportunity to thank Kailash, Dinesh, and Sarvesh for inviting me to participate in the 55th Foundation Day of your group. It was almost a year ago that Dinesh had graciously invited me to be part of your Foundation Day, and I accepted instantly because the Ruchi Group of Industries and the Godrej Group share much more in common than just operating in similar lines in business. We share similar value systems and a commitment to grow our businesses ethically and sustainably through good corporate governance practices and structures. Growth and profitability are the core rationales for running a business. But business houses that focus on growth and profitability to the exclusion of broader stakeholder interests such as sustainability and good governance are bound to underperform in the long run because of compromised relevance, increased transaction costs, and reduced stakeholder confidence. The onus of protecting broader stakeholder interests is even more compelling in the case of family-managed conglomerates such as our respective groups. Family-managed business is as old as commercial enterprise itself. Yet the popular myth and perception deems these enterprises as capricious, short-lived, and insufficiently consequential. None of this is by and large true. Worldwide,
as in India, family-owned and managed businesses have survived multiple generations, have grown to become multi-billion-dollar corporations, and have continued to make strong contributions to the economy and society. Today, family-managed businesses make up more than 2/3 of the world's companies, employing half the world's workforce, and contribute to well over half the world's GDP. Over 1/3 of the companies in the list of Fortune 500 companies are family managed. Globally, some of the most influential and well-known businesses such as Ford, Cargill, Carrefour, Samsung, Virgin and Walmart are family businesses. In India, family-owned and family-managed businesses such as the Ruchi and Godrej groups account for over 95% of all registered companies in the country. The Ruchi Group of Industries and the Godrej Group have each made a strong commitment to world-class governance practices and sustainable growth, not just through activities like induction of independent professionals on the boards and in the management of our companies, but also through our operations in businesses tailored to better and responsibly serve society as a whole, and of the Aam Aadmi in particular, through our range of products, services, distribution networks, pack sizes, and price points. The similarity between our groups extends beyond strong governance and ethical leadership to portfolio choices that reflect our respective beliefs in the long-term growth potential and viability of specific sectors in India. Both the Ruchi Group of Industries and the Godrej Group have placed big bets on the future potential of palm oil, biofuels, consumer products, real estate and information technology. Besides, each having a strong base in heavy engineering. I will spend the next couple of minutes discussing why I consider these choices integral to our growth in the backdrop of India's growth over the next decade. The 55th foundation day of the Ruchi Group coincides with our entry into the second decade of the 21st century. A decade which, in my opinion, portends to be modern India's defining moment, an inflection point that one will look back upon in succeeding decades as similar. Our nation is in the throes of a transformation from a largely stagnant, inward-looking, over-regulated economy to a thriving, market-driven economy that is integrating with the world. India's democratic growth model, though slower than China's, is much more inclusive and sustainable. By most accounts, India will be the fastest growing large economy by 2013, outpacing even China. India has the inherent potential and attendant circumstances to grow its GDP at an average of 10% over the next decade. In short, never before since independence has there been so much optimism in the future, and never before has there been such a wealth of opportunities for our succeeding generations. The portfolio choices that we as business houses have made in the past are likely to bear bountiful fruits over the next couple of decades. For those choices aligned with the foundation consumption needs of an economically emerging society. I say this for a couple of reasons. One, firstly, through much of its independent existence, and pretty much up to the mid-90s, India was considered to be plagued with the problem of overpopulation that was being a drain on our resources and a dampener to any kind of development effort. This population crossed the 1 billion mark in 2000 and coincided with the maturing and saturation of basic consumption in advanced countries. With this came some changes in perspective. India's population, which was hitherto considered a pain, suddenly came to be regarded positively, and its youthful skew as a demographic dividend.
say this for a couple of reasons. One, firstly, through much of its independent existence, and pretty much up to the mid-90s, India was considered to be plagued with the problem of overpopulation that was deemed a drain on our resources and a dampener to any kind of development effort. This population crossed the 1 billion mark in 2000 and coincided with the maturing and saturation of basic consumption in advanced countries. With this came some changes in perspective. India's population, which was hitherto considered a pain, suddenly came to be regarded positively, and its youthful skew as a demographic dividend. The growing and underserved population was seen as a market and not a lodestone. The realization that India would be amongst a handful of countries whose working age populations would continue to grow and dependency ratios continue to fall gave a new understanding to the once belied statistic. India's population has grown at a blistering pace over the last decade, rising by over 150 million people, which is equivalent of adding the entire population of Bangladesh or Nigeria to India's over the last decade. To put this in perspective, Bangladesh and Nigeria rank as the 7th and 8th most populous countries in the world respectively. Between now and 2030, India will add 241 million people in the working age group, with the percentage of the working age population increasing from approximately 60% today to close to 65% by 2030. In 2020, the average age of an Indian will be 29 years versus 37 years in China and the United States and 45 years in Western Europe. Harnessed intelligently, this demographic dividend can morph into becoming the most significant assets to catalyze India's economic growth. Secondly, the decade beginning in 2000 was a decade of intense urbanization. Cities have always been the centers of commerce and culture throughout history. Migration from villages to towns and cities will rise at an accelerated rate, as it would in any growing economy. The momentum of employment creation in the agricultural-based rural economy will, by its intrinsic nature, lag behind the job absorption capacity of the services and manufacturing sectors that abound in urban centers, thus creating an urban pull for livelihood seeking and aspirational entrance into the workforce. As a result, the urban population of India, that was about 290 million in 2000, will progress to over 340 million by the end of the decade. A recent McKinsey report on Indian urbanization shows the accelerating pace of India's urbanization phenomenon by comparing the growth in India's population in the 37 years between 1971 and 2008 with the growth projected in the next 20 years. While the Indian urban population grew by 230 million in the 37-year period, it is forecasted that the next 250 million growth will come in less than 50% of the time. The number of urban agglomerations with populations in excess of 1 million people has also steadily risen over the years, from 24 in 1991 to 35 in 2001 to approximately 42 today. Mahatma Gandhi's statement at the beginning of the 20th century that the soul of India lives in its villages is quickly being rewritten, with a large part of India now living in our towns and cities. The coming decade is almost certainly going to see an uptick in this trend. This has two major implications for our businesses. Firstly, the rapid rise of urban agglomerations and migration from rural to urban India will put tremendous pressure on urban infrastructure and housing. McKinsey estimates that India will require over 700 million square meters of commercial and residential space every year up to 2030 to deal with this
rapid urbanization. This is an equivalent of building the entire city of Chicago or 2 Mumbais every year. Truly eye-popping numbers. Secondly, and more concerning, is a shift away from agriculture in rural India, where in 2012 it is estimated that only 33% of the population will be engaged in agriculture, as opposed to 46% in 2007. This trend can only intensify with urbanization, and therefore will require the use of technology to improve yields from farms if we are to maintain our food security. Businesses like ours that invest significantly in R&D, adopt and disseminate newer technologies, and partner with India's farmers to improve their farming practices hold the key to India's rapid agri-sector growth. The third and connected macro trend that will benefit us tremendously is the impending consumption boom which began in the 2000s and will accelerate considerably this decade. Domestic consumption over the last decade saw a marked increase, with Indians consuming more of almost all goods and services than they were in the 90s. To illustrate, Indians consumed 568 billion kilowatt hours of electricity in 2009, which is 144 billion kilowatt hours more than was consumed in 1999. Automobile sales, which were less than 5 million per year at the beginning of the decade, has risen to over 12 million per year by 2010, and domestic air passenger traffic has grown from 14 million in 2000 to over 44 million by the end of 2009. India's nominal private final consumption expenditure in 2010 was approximately $790 billion US and is expected to rise to $3.6 trillion US by 2020. Low penetration levels of key categories like consumer durables and automobiles, combined with rising income levels and greater access to credit, will aid this consumption. The FMCG sector, including food and non-food products, is likely to be the key beneficiary of this consumption boom, growing at between 13 and 15% compounded annual growth rate over the decade. And lastly, there are legitimate concerns over the sustainability of our continued growth, largely due to structural uncertainties and on account of a deficit in optimism occasioned by the current loss of faith in the political and business environment, due largely to the irresponsible actions of a few. Structurally, the consumption story of the next decade would be significantly advanced if transaction costs are reduced by eliminating non-value-adding barriers to free movement of goods through the implementation of the goods and services tax, which in my opinion should by itself boost our GDP by 1.5 to 2 percentage points when implemented. Reforms in the agricultural sector are undertaken and new capacity creation is encouraged. Every cloud, however, has a silver lining, and in my view, the lack of probity of business houses and corruption within the government, which seem to be dominating the airwaves and dampening the potential growth momentum of our economy, are good at this stage in our history because of the increased public awareness and ire that they have generated. Bihar is a shining example of the intolerance of the common man to poor governance and corruption, and the recognition and endorsement of good governance. The recent landslide election victory of Dinesh Shahra demonstrates a shift in awareness levels and realization that development-based politics is the best way forward. Similar public reaction to any lack in integrity, whether by business houses, government officials or individuals, is the panacea to restore probity in the Indian economic and social system and will ultimately lead to greater confidence in the robustness of India's growth story. Ladies and gentlemen, over the last few minutes, I have shared with you what I consider to be critical
India over the next decade. The Ruchi Group of Industries, like the Godrej Group, is active in businesses that are poised to capitalize on India's growth over this period. The last and most important component to fully realize the growth potential of the decade is great leadership. With Kailash, Dinesh, Sarvesh, and all of the other members of your leadership team, and the other members of the Shahra family, and your professional leadership team, the Ruchi Group